Hello everyone, this is Rabbia. In this video, we will solve question number 18 from exercise 3.2, chapter number 3. So that the equation of the line through the origin making an angle of measure phi with the line y is equals to mx plus b is y over 6 is equals to m plus tangent phi divided by 1 minus tangent phi. Let L1 is equals to y is equals to mx plus b and L2 be the required line. Now from L1 m1 is equals to m. Now angle between lines, since हमें angle पता है, tangent theta is equals to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2. Tangent phi is equals to m2 minus m divided by 1 plus m into m2. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. टेंजेंट phi प्लस m2 टेंजेंट phi is equals to m2 minus m. m2 minus m2 tangent phi is equals to tangent phi plus m. हमने m2 वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दिया ताकि हम यहाँ से m2 कॉमन ले लें. तो ये हो जाएगा 1 माइनस m टेंजेंट phi इज इक्वल्स टू m प्लस टेंजेंट phi. यहाँ से हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई m प्लस टेंजेंट phi डिवाइडेड बाय 1 माइनस m टेंजेंट phi. Now for equation of L2, applying slope point formula. Since the line is passing through the origin, इसलिए हमारे पास एक पॉइंट है 0 0. y minus y1 is equals to m into x minus x1. y minus 0 is equals to m plus tangent phi divided by 1 minus m into tangent phi into x minus 0. इस x को मैं यहाँ पे आके डिवाइड कर रही हूँ. y over x is equals to m plus tangent phi divided by 1 minus m into tangent phi. यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी. हैंस प्रूव्ड.